Hello students and Jai Hind. I am RST Solanki, All India Rank 28, AFCAT first cycle of 2022, back again with another fiery and interesting lecture topic. So today's lecture topic will be based on as described by the world's top leaders and economists as world's most important bilateral relation of 21st century. So this is a relation which we are talking between two countries. Any guesses about the two countries? The two countries are US and China. US the most super developed country and China which is upcoming and is the biggest business tycoon country there is. So the bilateral relations between them are always an on and off. So we will study and discuss and read about all the details of their past relations in crisp so that you can give out that information in a 3-minute lecturate. So let's begin. Alright. Considering that the US and China are the most powerful countries in the world, which they are. US and China are the most powerful countries in the world at present. Okay. It becomes important to study the equations between these two nations. The bilateral relations between both the countries are complex. Alright. Tensions between these countries have again been fueled. Now, as I always talk about that you have to link it with a current event that has happened. So what is the current event that has happened between US and China relation? US speaker visited Taiwan. Now Taiwan is a hot topic between US and China. Okay, so we will get to know why. So US speaker, that is Nancy Pelosi, visited Taiwan in August 2022 and that has erupted more arguments between US and China once again. Now let's read about their relations in a bit of depth. Okay. Bilateral relationships between the two have been complicated and complex as we talked about since the formation of the People's Republic of China in 1949. तो 1949 में भैया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी, ठीक है. तो वो पार्टी बनने के बाद ही यूएस और चाइना के रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे. अब ऐसा क्यों, उस पार्टी ने ऐसा क्या किया? तो 1949 में तो ये पार्टी बनी जिसको पीआरसी बोलते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. 1950 में हुआ कोरियन वॉर. अभी कोरियन वॉर किसके बीच में हुआ था? From the name itself we can guess that is North Korea and South Korea. So what happened? North Korea invaded South Korea. All right. तो South Korea अपना शांति से बैठा है, but North Korea ने South Korea में invade कर दिया. And guess who is backing North Korea? As we can use our little sense that North Korea is attacking. तो China तो हमेशा attacking team के साथ ही होता है. तो North Korea was backed up by China. So US supported South Korea. Okay, so when North Korea invaded into South Korea, China supported North Korea, while US along with the UN backed South Korea. Okay, so that is one more debate and fight between these two nations. Okay, so first we read about the party that was formed in 1949 and then we read about 1950 Korean War. Okay. Next, the following year of 1954 saw Taiwan Strait crisis. This led to US threatening China of a nuclear attack in 1955. तो भैया अब हो गया 1954 में ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस. बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये और बहुत ही वास्ट एक डिस्ट्रक्शन हुआ था इसमें, लड़ाई एंड एवरीथिंग. सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन अनदर लेक्चर, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि 1954 में हुआ था ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस. ओके, तो ये ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस में यूएसए वाज सो मच इनटू वी कैन से अनइंटरेस्टेड एंड अनॉयड बाय चाइना दैट इट सेड एंड धमकाया उसने चाइना को कि मैं आप पे अब न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा भैया, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. In 2018, the trade war between the world's two largest economies started. So initially तो ये थोड़ा political, थोड़ा geographical था, ठीक है. बट अब 2018 से ये क्या हो गया? इकोनॉमिक हो गया.
एकदम बिजनेस ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। तो 2018 में इन लोगों के बीच में क्या हो गया, ट्रेड वॉर शुरू हो गया। ओके, नाउ दे आर द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज, रिमेंबर दैट, यूएस एंड चाइना। नाउ अभी बीच में हमारी ट्रम्प गवर्नमेंट आ रही थी यूएसए में, तो ट्रम्प ने मेजॉरिटी कंट्रीज पे कुछ कुछ टैरिफ लगा दिए थे, कुछ कुछ बैन लगा दिए थे। ऑल राइट, सो ग्लोबलाइजेशन का जो मोटो लाया था यूएसए, उसको ट्रम्प की पॉलिसीज ने कट कर दिया था। सो आफ्टर व्हेन बिडेन वाज इलेक्टेड, बिडेन गवर्नमेंट केम, तो उसने मेजॉरिटी ऑफ द ट्रम्प डिसीजंस को अंडू कर दिया, लेकिन उसने ज्यादातर कंट्रीज के टैरिफ तो हटा दिए, बट चाइना के नहीं हटाए, ठीक है। तो बिडेन गवर्नमेंट सस्टेन्ड सम ट्रम्प पॉलिसीज एंड इट स्टिल कंटिन्यूज टैरिफ्स ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। तो चाइना पे अभी भी टैरिफ लगा रखा है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, तो ये सब का कंक्लूजन क्या है, विद कंटिन्यूस टेंशन बिटवीन द टू नेशंस द सिचुएशन इज फार फ्रॉम बीइंग कूल्ड एंड द टू कंट्रीज आर वेरी अनलाइकली टू कोऑर्डिनेट। तो हमें पता पड़ा कि कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन के हिसाब से इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन जो है वो तो पॉसिबल नहीं है। द ओनली सॉल्यूशन दैट सीम रैशनल is to forego the areas of conflict and have formal talks to discuss areas of mutual interest. अब भैया ऐसा तो है नहीं, because both the countries are part of the entire globe. तो कुछ ना कुछ formal talks और peace तो रखना पड़ेगा। तो despite being the complex and non-coordinated relation, they still have to maintain that formal and peace talks so that they can get involved in international summits. Okay, so that was all for today about US and China relation. I guess you all might have enjoyed this, and it is a very hot topic and very important one. Okay, so after this we will also discuss India-China relation. So that's all for today, my friends. Thank you all for joining and stay connected on Force NDA channel. Jai Hind.